All right, जी today we'll be starting off with the two more pillars of Islam. तो पहले फास्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम ज़कात डिस्कस कर लेंगे. देन यू कैन सॉल्व द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल और फिर मुझे आज ही भेज दें ताकि आई कैन चेक एंड मार्क. So fasting is the third pillar of Islam, which means to abstain or give up something. One stays away from eating, drinking, sins, and sexual activities from dawn till sunset, and it is obligatory on all Muslims. Muslims fast in the month of Ramadan, which is about to come as well, and the intention for the fast is made at the time of Sahri. अब ये कौन सा part start हो गया? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, describe the practices. ठीक है कि फास्टिंग कैसे होती है वो पूरी प्रैक्टिस जो है दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट द इंटेंशन फॉर द फास्ट इज मेड एट द टाइम ऑफ सेरी एंड इट इज सुन्ना टू टेक द प्री डॉन मील ड्यूरिंग द डे मुस्लिम्स डोंट ईट ड्रिंक टेक मेडिसिन और हैव एनी सेक्सुअल रिलेशंस मुस्लिम्स स्पेंड द डे इन ओबीडियंस ऑफ अल्लाह और कुरान भी इसी मंथ में रिवील हुआ था मुस्लिम्स आल्सो ट्राई टू कंप्लीट द कुरान 30 दिन में 30 पारे पढ़ते हैं एंड मुस्लिम्स मस्ट आल्सो बी पेशेंट एंड नॉट हार्म एनीवन अब आपने जब रोजा रखे इसका ये मतलब नहीं पूरा दिन हम कुछ भी कर ले भाई रोजा रखा हुआ खा पी नहीं रहे बस दैट्स नॉट द पर्पस दैट इज नॉट इवन ओबेइंग द मेन पर्पस क्या है फॉलो द इस्लामिक प्रैक्टिसेस प्रे 5 टाइम्स अ डे ठीक है डोंट ईट एंड ड्रिंक ना ही कोई बैड लैंग्वेज यूज करें हार्म एनीवन पेशेंट रहे गुस्सा नहीं करना काम रहे कुरान पढ़े ये रोजा कंप्लीट करता है और बाकी ऑब्वियसली पढ़ाई भी होती है डेली लाइफ ये नहीं बिल्कुल ही खत्म करनी डेली लाइफ के जो काम है बाहर जाना है पढ़ाई करनी है वट एवर यू कैन डू दैट एज वेल द फास्ट इज completed एट द टाइम ऑफ सनसेट एट द मगरिब प्रेयर एंड द सुन्ना इज टू ब्रेक द फास्ट विद डेट्स खजूरों से ये सुन्नत है अब ये हमें टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट सिखाती है दिस इज द सुन्ना मुस्लिम्स ईट iftar after breaking the fast and iftar parties are also carried out which strengthens the family bonds iftar is also distributed among the poor and it is sunnah to break the fast immediately after sunset breaking a fast requires kafara अगर आपके कोई रोजे मिस हो जाता है जैसे एक फास्ट अगर आपका मिक्स मिस हो जाता है 30 में से तो आपको 60 कंसेक्यूटिव डेज तक रोजा रखना पड़ेगा फॉर वन broken fast. Fast can be postponed due to journey or illness, but they must be made up later as well. Muslims also observe itikaf in the last 10 days of Ramadan. They search for the night of power. Laylatul Qadr is the night the Quran was revealed, and it is better than 1,000 months. Its exact date is unknown, but people may be exempted from the fast if they are pregnant. अब ये वो वाली conditions है where they can be exempted. ये आपके पास क्या है? This is a 4 marks question where they are exempted. Even if they're traveling, they are sick, too young or too old, or if they are menstruating, अगर उनके periods चल रहे हैं. All except the young or old need to make up their missed fast later. Muslims generously give in charity during the month, and the month of Ramadan ends when the Mool Shawwal is sighted. The first of Shawwal is celebrated as Eid al-Fitr. So, what is the importance of fasting of individuals? ये भी क्या है? This is 4 marks question as well as 10 marks question पूछा जा सकता है. It develops piety, self restraint किस तरह के आप खुद ही से एक आपको बहाना मिल जाता है कि मैं बुरे कामों से बच जाऊं आपके पास कोई रीजन होती है that you can abstain yourself from all those bad practices. Also, this strengthens your relationship with Allah, helps control evil desires, promotes regularity, develop the sense of accountability, and it has a lot of health benefits as well. And what is the importance of fasting for communities? It develops sympathy for poor. हमें गरीबों का एहसास होता है गरीबों का कैसे एहसास होता है हमें बचपन में ये बताया जाता है रोजे क्यों रखते हैं ताकि हमें उन गरीबों का एहसास हो जो पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स रिलेशंस बिटवीन फैमिलीज जब आप अफ्तार पार्टीज पे जाते हो एक दूसरे के घर भी and also it avoids sins as a community, no harm to others. It also promotes generosity and aids the poor with charity. अब ये आपके पास बहुत अच्छे रेफरेंसेस आपको ये देखो ये सारे रेफरेंसेस ना एंड पे लिखे हुए हैं अभी जो आप मुझे आंसर सबमिट करोगे उसके अंदर ये वाले रेफरेंसेस होने चाहिए फास्टिंग के और बेशक सारे डाल देना द मंथ ऑफ रमजान इज दैट इन विच दैट द कुरान वाज रिवील्ड Oh, you have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, so that you may become righteous. When the month of Ramadan comes, the doors of heavens are opened, and the doors of hell are closed, and the devils are chained. टेक द प्री डॉन मील एज इट हैज द ब्लेसिंग्स ये आपके प्रैक्टिसेस में आ सकता है अगर आपको कोई प्रैक्टिसेस का आता है कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं फास्टिंग को वहां पे आप ये मेंशन कर सकते हो अल्लाह आल्सो सेज दैट फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई शैल सर्टेनली कंपनसेट इट
And the Prophet also says at one place that if one of you is fasting, अभी आपके पास हदीस है, he should break his fast with dates. ये भी आप practices में डाल सकते हैं कि रोजा खोलना कैसे है. This is what the Prophet hadith said. Got it? समझ आ गया?